Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's lecture, we are going to start with class 9th Geography chapter 1 named as India, Size and Location. As the name of the chapter itself suggests that India, Size and Location, that means in this chapter we are going to study about India. What is the size of India? What is its location? What is its relation with the world? What is its relation with the neighboring countries? Everything related to India is something we are going to study in this chapter. So when we have to study about location, size of India, for a better understanding, we have to be aware about what are latitudes and longitudes. Because if I ask you to locate India, so how will you locate it? For it, you require a knowledge about latitudes and longitudes. As all of us know that geography is not something that can be just learned. It is something that we have to understand. Geography is a living subject, right? So, for a better understanding, we should be aware about what are latitudes and longitudes. So, before starting off this, we are going to first discuss latitudes and longitudes. So, if you remember, when we started off our geography in class 6th, we have discussed about the two terms named as orbit and axis. What is orbit? The fixed path on which the planets of the solar system revolves around the sun. It is regarded as orbit. And what is axis? Axis is an imaginary line which connects North Pole with the South Pole. That is known as axis. Every planet has its own axis. Earth की भी अपनी axis होती है जब वो अपने ही place पे घूमती है, right? And what is orbit? A fixed elongated path on which the planet revolves around the sun. I hope these two terms are clear. Now we have to understand what are latitudes and what are longitudes. What are latitudes? क्या होते हैं latitudes? हमने पढ़ा था बहुत सारे latitudes होते हैं, but कुछ important latitudes ही हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, which are Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Latitudes moves from west to east direction, right? And what are they? They are horizontal lines. All latitudes are imaginary lines. No such lines are present on the earth, but we have imagined it for our better understanding. So, they measure distance north or south of the equator. Distance from north to south. So, this is north and this is south, and latitudes helps us to measure the distance between them of the equator. Equator middle में है. Latitudes जो है इनका distance same होता है. Okay. Now, when we talk about the number of latitudes, so they are 90 plus 90 plus 1. 1 is equator. So, total number of latitudes is 181. I hope it is clear now what are latitudes. Latitudes are the imaginary lines, horizontal lines that measure the distance of north or south of the equator. And they are very important for understanding the locations, right? Now we are going to start with longitudes. We are going to study about longitudes. Now what are longitudes? Longitudes, the vertical lines that are the measurement of the east or west of the prime meridian, right? This is western hemisphere, this is eastern hemisphere, and these are the movements, right? Prime meridian. These are the lines. Okay. Now, prime meridian time determine करता है. Longitudes के through हम क्या देख सकते हैं? Time. And international date line, when we move from here to here, the date changes. I hope it is clear now. Total latitudes 360. Longitudes 360. So, latitudes are the horizontal lines and whereas longitudes are the vertical lines, right? And they helps us to determine the date and time, whereas latitudes helps us to measure the distance from north to south. Understand?
By understanding the concept of latitudes and longitudes, now we can understand the size, the location of India, where it exists in this world. I hope it is clear. Now we are going to start with location of India. When we talk about location, the first thing that comes in our mind is, where does India lies? That means, in which continent does India lies in this world? This world consists of 7 continents. We know that. And those 7 continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. And if I ask you, in which continent India lies in? India lies in Asia. Asia is the continent in which India lies. And Asia consists of 6 parts, and out of those 6 parts, India lies in South Asia. This is important. India lies in which part of the Asian continent? All of us know that India lies in Asia. Am I correct? But which part of Asia? That is South Asia. Now, when we have a look at this diagram, we can understand that this is Western Hemisphere, this is Eastern Hemisphere, this is Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. And in this, we can see that this is Earth, right? And we can see that India lies here in Asia and it lies in Northeastern Hemisphere. So if I ask you, in which hemisphere does India lies in? So India lies in Northern Hemisphere, and you can also say that India lies in Northeastern Hemisphere, right? As clearly we can see in this diagram, it is clear that India lies in Northeastern Hemisphere, right? I hope it is clear now. When we talk about the location of India, so India lies in Asian continent, right? So, area of India is 3.28 million square kilometers. कितना बड़ा है India? 3.28 million square kilometers. India is the 7th largest country of the world. We know that there are 7 continents and India is the 7th largest country of the world. So that we can learn it easily that it is the 7th largest country. Now, अगर हम देखें कि area wise इंडिया 7th लार्जेस्ट है, पर फर्स्ट 6 कंट्रीज कौन सी हैं? सो यू कैन हैव अ लुक हियर. फर्स्ट इज रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th नंबर इज आवर कंट्री इंडिया. सो ये हमें लर्न होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और उन 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के हमें नाम भी याद होने चाहिए. सबसे पहला इज रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. अब इंडिया का ये जो एरिया है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये हमारे पूरे उसमें वर्ल्ड की उसमें परसेंटेज में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया. इंडिया इस वर्ल्ड में ही आ रहा है और पूरे वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का जो एरिया है, जितने में इंडिया एक्सपैंड हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन इज 2.4%. इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो ये चैप्टर जो है बेसिकली हमारा 2 ही चीजों पर रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज इंडिया का साइज क्या है और इंडिया का लोकेशन क्या है. हमने पढ़ लिया था इंडिया की लोकेशन के अंदर कि इंडिया का किस में आता है? हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में. ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया में. कौन से उसमें आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. फिर हमने पढ़ा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बेसिकली इंडिया कैसे आ रहा है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. वर्ल्ड में हमने अगर उसकी देखी लोकेशन तो इंडिया कहाँ पे आ रहा है, इतना हमको सबको समझ में आ गया था. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया था कि इंडिया जो है वो एशिया में तो आ रहा है, पर इंडिया कौन से एशिया के 6 पार्ट्स थे और किस में आ रहा था? साउथ एशिया में. अब हम इंडिया की लोकेशन पढ़ेंगे, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. जब हम ये मैप को देखते हैं, इंडिया के मैप को, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाती है. यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो इंडिया में हम अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या कौन सा आ जाएगा? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में. सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे हम तो इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या है? सुनामी में 2004 के अंदर सबमर्ज हो गया है. अभी इंदिरा पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, दैट इज इन तमिलनाडु. देन
हमें नॉर्थ और साउथ, हमने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा, इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर, एंड साउदर्न मोस्ट इज इंदिरा पॉइंट दैट गॉट सबमर्ज्ड इन सुनामी इन 2004 तमिलनाडु, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस इज 3214 किलोमीटर्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेस्टर्न टू ईस्टर्न, सो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, गौर मोती गुजरात कच्छ के अंदर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो इस किबीथू अरुणाचल प्रदेश, किबीथू अरुणाचल प्रदेश। सो दीज आर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, southern most point, western most and eastern most point, and the distance between the westernmost and the easternmost is 2933 किलोमीटर्स। तो जब भी अगर हमें बोलते हैं हमें इंडिया को लोकेट करना है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हमारा 3214, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2933, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। आगे पर समझ में, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा आ गया, इंदिरा कॉल, सदर्न कौन सा आ गया हमारा इंदिरा पॉइंट, वेस्टर्न कौन सा आ गया हमारा गौर मोती कच्छ के अंदर गुजरात, एंड ईस्टर्न कौन सा आ गया हमारा किबीथू अरुणाचल प्रदेश। ये तो बात हो गई हमारी सिंपल सी कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट, डिस्टेंसेस कितने हैं नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट ईस्ट के बीच में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, हमें पता है लैटिट्यूड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स जो है उनको बेसिकली हम ये मानते हैं कि टाइम, ठीक है, टाइम को इन्फ्लुएंस, सनराइज हो रही है जो कहाँ से, सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और लैटिट्यूड्स किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट व्हेन वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। सो हमारा अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात आती है तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया सो इट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। ये होगा हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लैटिट्यूडनल extent. When we talk about latitudinal extent, they determine the day and night when we move from north to south. And when we talk about longitudinal extent, so they determine the sunrise and the sunset when one moves from east to west. यहाँ से यहाँ चलेंगे, मतलब इधर अरुणाचल प्रदेश से हम गुजरात की साइड चल रहे हैं। अब हमने तो ये पढ़ा है कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कितुबु अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा कच्छ में गुजरात, ठीक है, गौर मोती, ठीक है। बट इन दोनों के बीच का जो टाइम लैग है, डिस्टेंस है, कुछ लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स पे क्या होता है, सन रेज पहले पड़ जाती है तो वहां पे जल्दी सनराइज हो जाती है, और कुछ लॉन्गिट्यूड्स पे सन रेज जो है वो लेट पड़ती है तो वहां पे सनराइज लेट होती है। तो ये जो टोटल टाइम लैग है ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का ये 2 घंटे का टाइम लैग है। कितने घंटे का, कितना टाइम डिफरेंस है, 2 आवर्स। पहले यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ तक आते आते जब तक लॉन्गिट्यूड्स मूव करेंगे यहाँ पे आते आते 2 घंटे लेट हो जाता है, ठीक है। अब इसका टाइम स्ट्रेच जो है वो हमने कितना मान लिया है, 30 डिग्री का स्ट्रेच मानना है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हैंस द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। अब हमें पता है लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो टाइम को भी डिटरमाइन करते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया फिक्स हो गया है 82 डिग्री 30 ईस्ट, passing through the Mirzapur, Uttar Pradesh, taken as the standard time for the whole country. As you can see here, ये लाइन जो है ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये हमारे पूरे इंडिया के लिए कितना फिक्स है 82 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इंडिया के 5 स्टेट से पास होता है। व्हाट आर दीज स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। This is all about the location of India. When we talk about the location of India in the world, we have studied that India lies in northern hemisphere and specifically in northeastern hemisphere, and India lies in Asian continent, and Asia के अंदर भी South Asia. And when we talk about the latitudinal extent and longitudinal extent of India, so it is 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 degree north, and the longitudinal extent 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 degree east.
हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, southern most point. Difference between them is distance 3214 kilometers, and from west to east the distance is 2933 kilometers. हमने पढ़ लिया हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है. हमारा ये जो इंदिरा पॉइंट था ये जो है हमारा तमिलनाडु के अंदर, ये सबमर्ज हो गया इन सुनामी इन 2004. ओके, and this standard time meridian is fixed for the whole country as 32 degree 30 degree. I hope it is clear now. And standard meridian passes through 5 states in India, which are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh. So this is all about the location of India. What is the location of India in the world and in India? Uske latitudinal extent, longitudinal extent. Discussed about the location of India. Now we are going to start with its size. The landmass of India has an area of, as I told you earlier, 3.28 million square kilometers. India has the land boundary of 15200 kilometers. India का total area जो हमारे world को contribute करता है is 2.4%. India जो है वो 7th largest country है in the world. I told you. First is Russia, second is Canada, USA, China, Brazil, Australia, and then comes our country India. Now when we talk about India and the world, the exchange of ideas and commodities through the routes. देखो पुराने टाइम में क्या होता था, हम अपने आइडियाज जैसे कि रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र, ग्रीक स्क्रप्चर्स, स्पाइसेस हम एक्सचेंज करते थे. हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे. तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम खाली इंडिविजुअल खुद नहीं जाते, हम अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपने बिलीफ सब लेकर जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं जो अननोन है उन्हें हम उनके बारे में बताते हैं. तो इससे क्या है, हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि हम स्पाइसेस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम करते हैं. ओके, आई होप we are done with the size and location of India and the world. कि हमारे वर्ल्ड के साथ जो है हमारी commodities या हमारे व्यूज कैसे एक्सचेंज हो रहे थे. हम अपने रामायण को एक्सचेंज कर रहे थे, पंचतंत्र, हमारे डेसिमल सिस्टम्स, ये सारी चीजें जो है ये ट्रैवल कर रही थी इंडिया से टू द अदर प्लेसेस. ऑलराइट, to start with India and its neighbor. All of us know that India is a union of 28 states and 8 union territories. India के अंदर 28 states हैं और 8 union territories हैं. Now India share land boundaries with Pakistan. India अपनी land boundary जो है वो किस किस के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. India share its land boundary with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal and Bhutan, Myanmar and Bangladesh. Our southern neighbors across the sea consist of 2 islands. हम 2 islands हैं, उनके साथ भी अपनी land boundary share करते हैं, which are Sri Lanka and Maldives. श्रीलंका जो है ये दोनों land islands है. श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea. एक narrow channel है sea का जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ये दोनों क्या है, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट कर देते हैं. While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ के अंदर Maldives present है. So that's all for our chapter today named as India, size and location. In this chapter we have discussed about our country India, its size and location. I hope you understood it well. If you really like my video and content, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.